बाहरी के गांव के चौक के दिल में जीवन एक बूढ़े आदमी रामू के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी हवा में भर जाती है। चौक हलचल से गुलजार है, दैनिक जीवन का एक जीवंत दृश्य। बच्चे रामू की कहानी से गहराई से मोहित हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। रामू अपनी कहानी शुरू करता है। उसकी आवाज एक कोमल धारा है जो बच्चों को उसकी कथा में और गहराई तक खींचती है। एक बार एक ईमानदार लकड़हारा था जो कभी झूठ नहीं बोलता था। रामू सुनाता है, एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी जिसने कभी झूठ नहीं बोला, बच्चों को मोहित कर लेती है। रामू के शब्दों से उनकी कल्पनाएं जागृत होती हैं। एक मामूली घर के धुंधलके में गरीबी का बोझ एक लंबी छाया डालता है। फिर भी सीता अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। उसका प्यार रात में एक प्रकाश स्तंभ है। सीता धीरे से अपने बच्चे को झुलाती है, उसे शांतिपूर्ण नींद में सुलाने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें कोमल और देखभाल से भरी होती हैं। बच्चा सीता की गोद में हिलता है, उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं क्योंकि वह नींद के खिलाफ संघर्ष करता है, अपनी मां की भक्ति की गहराई को महसूस करता है। बेटा, हमेशा सच बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, सीता फुसफुसाती हैं। उनकी आवाज एक मां की गहरी उम्मीद और गहन ज्ञान से भरी हुई है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक गंभीर वादा और एक मां का सिद्धांत जो उसे जीवन की परीक्षा से गुजरने के लिए निर्देशित करने के लिए है। जैसे ही बच्चा नींद में डूब जाता है, सीता की सुरक्षात्मक निगाहें बनी रहती हैं। दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से उसकी रक्षा करने की एक मूक प्रतिज्ञा। घने जंगल में राहुल और विजय दूसरे के बगल में चलते हैं। ऊपर चंदवा से छनकर आती धूप। राहुल झुकता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह जमीन पर चमकती हुई कोई चीज देखता है। वह सोने का सिक्का उठाता है, जल्दी से उसे अपनी हथेली में छुपाता है। उसके चेहरे पर एक छाया छा जाती है। जब विजय पूछता है तो राहुल जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं मिला। पक्षियों की आवाज जंगल में गूंजती है क्योंकि राहुल का झूठ दोनों दोस्तों के बीच हवा में भारी है। The dense fog clung to the hills of Kasauli, a quiet hill station nestled in the Himalayas. The year was 1978, and the old colonial-era guest house, the Whispering Pines, stood at the edge of a cliff, its wooden floors creaking with secrets. 5 strangers had arrived that weekend, each invited by an anonymous letter promising a life-changing revelation. The guest house was deserted, save for the caretaker, an old man named Raghu, whose eyes seemed to see more than he let on. The guests were an eclectic mix: Dr. Vikram Seth, a disgraced surgeon; Meera, a journalist with a nose for scandal; Arjun, a retired army major with a limp and a haunted past; Shalini, a wealthy widow with a penchant for secrets; and Rohan, a young artist whose sketches seemed to predict the future. The letters had been specific. No one was to leave until Sunday, when the host would reveal themselves. The first night was tense. The group gathered in the dimly lit dining hall, the fire crackling as the wind howled outside. Raghu served dinner in silence, his hands trembling as he poured the wine. Meera noticed his unease and pressed him for answers, but he muttered, "Some truths are better left buried," before retreating to his quarters. By midnight, the storm had cut the power. The group sat in candlelight, sharing uneasy glances. Arjun, ever the skeptic, scoffed at the cryptic letter, but his bravado faltered when a scream pierced the silence. They rushed upstairs to find Shalini's room empty, her window open, and a single red rose on her bed. There was no sign of her. Panic set in. Vikram insisted it was an accident, but Meera wasn't convinced. She found a scrap of paper under Shalini's bed with a single word: confess. The group turned on each other, accusations flying. शाम रामपुर गांव पर उतरती है, जहां अर्जुन और उसके दोस्तों के पैरों के चारों ओर धूल नाचती है क्योंकि वे एक उत्साही फुटबॉल मैच में लगे हुए हैं। ढलते सूरज की किरणें खेत में लंबी छायाएं बनाती हैं जो अर्जुन के मंत्रमुग्ध कर देने वाले फुटवर्क में एक नाटक का स्तर जोड़ती हैं। ग्रामीण अर्जुन की असाधारण प्रतिभा से मंत्रमुग्ध होकर एकत्रित होते हैं।
उनकी आंखों में विस्मय और प्रशंसा का मिश्रण झलकता है। कोच वर्मा किनारे से देखते हैं। उनके चेहरे पर गर्व और चिंता का मिश्रण है, क्योंकि वह ज्ञान के शब्द देते हैं। अर्जुन, प्रतिभा आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको वहां रखता है। अर्जुन रुक जाता है। कोच के शब्द शाम की हवा में गूंजते हैं। घूमती धूल और फीकी रोशनी के बीच प्रतिबिंब का एक क्षण। अर्जुन हावी हो जाता है। एक गोल करता है क्योंकि भीड़ जोरदार तालियों से गूंज उठती है। एक प्रतिद्वंद्वी की क्रूर धक्का अर्जुन को लड़खड़ाता भेजता है, लेकिन रेफरी अचल रहता है। अर्जुन के भीतर क्रोध भड़क उठता है, क्योंकि उसका संयम टूट जाता है, जिससे एक भयंकर जवाबी कार्रवाई होती है। अर्जुन रेफरी का सामना करता है, विरोध में चिल्लाता है, केवल एक त्वरित निंदात्मक निर्णय से मिलने के लिए। लाल कार्ड। बांझ लॉकर रूम में अर्जुन अकेले बैठा है। उसकी हार उसके कंधों के हर झुकाव में स्पष्ट है। अर्जुन के चेहरे पर आंसू चुपचाप बहते हैं। हर बूंद ऊपर की कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी को दर्शाती है। कोच वर्मा सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनके कदमों की आहट भारी चुप्पी में एकमात्र आवाज है। कोच वर्मा शांत भाव से कहते हैं, याद रखो अर्जुन, फुटबॉल सिर्फ पैरों से नहीं, दिल और दिमाग से भी खेला जाता है। यह रेड कार्ड अंत नहीं है, यह एक सबक है। कोच वर्मा कहते हैं, ज्ञान देते हुए। एल्डोरिया कैसल की भव्यता के बीच राजा एल्ड्रिक अपने सिंहासन से शासन करते हैं, जो उनके लोगों के लिए आशा की किरण है। विद्वान, लोहार और वैद्य एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे अपने राजा की ओर मुड़े हुए हैं, उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एल्ड्रिक की निगाहें इकट्ठे हुए लोगों पर घूमती हैं। उसकी आंखें उसके क्षेत्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। अटल संकल्प के साथ राजा एल्ड्रिक घोषणा करते हैं, एल्डोरिया में कोई भी पुरुष, महिला या बच्चा तब तक पीड़ित नहीं होगा जब तक मेरे पास इसे रोकने की शक्ति है। उनके शब्द पूरे महल में गूंजते हैं, जो एल्डोरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षा और समृद्धि का वादा करते हैं। आशा के साथ वातावरण घना हो जाता है, क्योंकि एल्डोरिया के निवासी अपने राजा के शक्तिशाली वादे में सांत्वना पाते हैं। एल्डोरिया और वोर्थैक्स की सीमा पर राजा एल्ड्रिक एकांत प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं। वह वोर्थैक्स की दुर्जय सेना का सामना करता है, एक अकेला व्यक्ति, एक अजेय ज्वार के खिलाफ। राजा वोर्गन, काले स्टील के कवच में एक भूत, उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है। वोर्गन की आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को चीरती है। तुम बिना हथियार के आए हो एल्ड्रिक। क्या तुम राजा हो या मूर्ख? एल्ड्रिक अडिग रहता है। युद्ध की छाया मंडराने पर भी उसका संकल्प अडिग रहता है। तंबू के अंदर एल्ड्रिक प्रवेश द्वार से आ रही धूप में नक्शे की ओर इशारा करता है। वोर्गेन ध्यान से सुनता है। एल्ड्रिक के व्यापार प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वोर्गेन बोलता है, उसकी आवाज में संदेह का एक संकेत, आप या तो बहुत चतुर हैं या बहुत भाग्यशाली। वर्षों बाद एल्डोरिया फलता फूलता है, जो उनके गठबंधन का प्रमाण है। In a secluded monastery nestled in the mountains, there lived a young disciple named Sean. Timid and observant by nature, Sean often found himself overwhelmed by the constant chatter of the world and the competing thoughts within his mind. Under the guidance of an aged and wise monk, Master Lee, he embarked on a quest to understand the power of silence. One crisp morning, Master Lee handed Sean a small bell and instructed him, spend one day without making a sound, and ring this bell if you wish to speak. Observe the world and learn. Throughout the day, Sean wandered the monastery, observing the bustling activity. He noticed the rhythm of the monks' footsteps, the rustle of leaves, and the gentle caress of the wind. Each moment flowed into the next without interruption, unlike the spirals of his thoughts that were often tangled. As the sun began to set, Sean sat by the river bank, mesmerized by the reflection of the orange and purple hues in the water. A young novice approached and began to speak, but Sean simply smiled, offering a gesture to the flowing river. Words were unneeded. The peace of the moment was enough. At day's end, Master Lee called Sean to his side. Did you ring the bell, my son? The master inquired. Sean shook his head. Master, I realize that noise is not just external.
In silence, I began to see how my own mind clatters like a restless drum. Masterly nodded with a gentle smile. True silence is more than the absence of sound. It is the stillness of the heart. Sean had discovered that through embracing silence, he had cultivated a deeper harmony within himself. The next day, Sean continued his practice, finding that his newfound stillness allowed him to approach life with tranquility and clarity. He realized that the gift of silence was not merely in the absence of words, but in the ability to listen, truly listen, to the world and his own heart. As the sutra says, in the silence of the mind, the lotus of wisdom blossoms. The principle embodied by this story is the profound peace and clarity that arises from practicing inner silence. जीवंत जंगल के हृदय में एक कौवा मोर को देखता है। मोर इतराता है। उसके इंद्रधनुषी पूंछ के पंख फैले हुए हैं। मोर के पंखों पर धूप चमकती है, जो एक शानदार तमाशा बनाती है। कौवा मोर की सुंदरता से मोहित है, अहंकार का अनुभव करता है। मोर ने घोषणा की, तुम कितने बदसूरत हो कौवे, तुम्हारे पंख इतने काले और फीके हैं। कौवा मोर के ताने से बेपरवाह बैठा रहा। जंगल के हृदय में एक मोर बेजोड़ वैभव के साथ इतराता है, जिसके इंद्रधनुषी पंख धूप में चकाचौंध करते हैं। जंगल के जीव प्रशंसा के साथ देखते हैं, क्योंकि मोर परेड करता है। उसका हर कदम गर्व और सुंदरता का प्रदर्शन है। ऊपर एक कौआ मोर को देखता है। उसकी नज़र तेज और गणनात्मक है। अदृश्य एक शिकारी जंगल में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति एक जीवंत पृष्ठभूमि के खिलाफ एक छाया है, क्योंकि वह अपना जाल बिछाता है। जाल आकर्षक ढंग से चमकता है, जो चमकदार जवाहरातों से सुसज्जित है, जो अनजान मोर को लुभाते हैं। आभूषणों के आकर्षण से आकर्षित होकर मोर सावधानी से आगे बढ़ता है, केवल शिकारी के जाल में फंसने के लिए। जंगल के हृदय में एक कौआ एक शिकारी के जाल में फांसे हुए एक मोर को देखता है। करुणा से प्रेरित होकर कौवा फंसे हुए मोर को उसकी दुर्दशा से मुक्त करने का संकल्प लेता है। अपने पंखों की निर्धारित धड़कन के साथ कौवा जाल की ओर उड़ता है। घने पत्तों के खिलाफ आशा की किरण। कौवा जाल को खोलना शुरू कर देता है। कौवे, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। मोर रोता है, उसकी आवाज नए सम्मान से भरी हुई है। यह कुछ भी नहीं है। सच्ची सुंदरता अंदर होती है, बाहर नहीं। कौवा जवाब देता है। उसके शब्द जंगल में गूंजते हैं। Albert Einstein, born in 1879 in Germany, was a physicist who revolutionized the understanding of space and time. His early curiosity about the compass sparked his interest in the unseen forces of the universe. In 1905, he published The Theory of Relativity, flipping conventional physics on its head with the astounding equation E equals mc squared. This insight paved the way for modern quantum physics and altered the scientific landscape forever. Einstein's ability to think beyond the horizon defined his career as he continued to challenge existing paradigms, postulating theories that were proven decades later. Despite the complexities of his work, Einstein's humility and dedication to peace made him a beloved figure beyond the scientific community. This is Albert Einstein, and this is how he changed the way the universe is understood. Meet Tim, professional couch potato, ambitious yet allergic to work. Tim discovered knitting, surprisingly addictive, like chips but not edible. His first scarf, more like Swiss cheese but with extra holes. Too lazy to fix it, he shared online as abstract art. Unexpectedly, the scarf became viral. Abstract art lovers declared it genius. Tim, realizing profit potential, knits world's worst or best scarves. Sales exploded. Every hipster wanted the holy hole scarf. Accidental artist, CNN called him. He took it literally. Opened Holy Scarf Cafe, where folks knit and nosh artisan snacks. His marketing: every scarf is a mistake worth making. Bestseller secret: premium yarn mixed with hidden snacks. Tim's success baffled him. TV shows wanted exclusive interviews. Taught courses titled Accidental Achievements 101. Students loved it. Today, Tim relaxes, knitting empire funding his sofa dreams.
From couch potato to scarf savant, success knitting for the lazy. Moral? Sometimes success finds you on the couch. In a little village amidst rolling hills lived Amelia, known for her gentle spirit and curiosity. Recently, she felt unrest, cluttered with worries of the future and past regrets. On a dreary morning, Amelia decided to walk through the forest beyond the village. The forest was her refuge, breathing with life and vibrant mystery, with birds and dew on leaves. Amelia stepped onto the path, the earth soft from rain. Trees arched above, whispering secrets to the wind. She focused on her breath, feeling the cool air fill her lungs. Her senses heightened, her pace lulled into a rhythmic dance with nature. The fragrance of pine and soil mingled with her thoughts, dissolving worries into clarity. The forest revealed life forms, squirrels scampering and a stream babbling unseen. Amelia embraced the vibrant tapestry, urged to relinquish her concerns. She paused at her favorite spot, a clearing where sunlight broke through, casting shadows and light. She lay on moss, tracing patterns in branches, her heart synchronized with the forest. Thoughts once chaotic arranged into understanding and acceptance. Her journey taught her the art of mindful presence, realizing the importance of space to heal. Returning to the path, a soft smile came to her lips, a peaceful knowing within. The forest soothed her spirit, promising tranquility amidst turmoil. Her walk concluded back at the village, her steps lighter and heart gentler, filled with gratitude towards the forest's embrace, reminding her to heal the soul, take a walk. एक धूप वाली गांव की सड़क दूरी तक फैली हुई है। एक कुत्ता खुशी से सड़क पर दौड़ता है। उसके मुंह में गर्व से रोटी का एक टुकड़ा दबा हुआ है। उसकी आंखें संतोष से चमकती हैं। हर कदम एक आनंदमय नृत्य। कुत्ता खुले आसमान के नीचे साधारण खुशी की तस्वीर सड़क पर आगे बढ़ता रहता है। एक कुत्ता आत्मविश्वास से पुल पर चलता है। एक राजा अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। वह बीच में रुक जाता है। नीचे नदी में चमकते प्रतिबिंब से मोहित उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। भ्रम की एक झलक उसके चेहरे पर नाचती है, क्योंकि वह अपनी दर्पण छवि को घूरता है। एक आवाज गूंजती है, इस दूसरे कुत्ते के पास भी रोटी है। लालच उसके दिल में बढ़ने लगता है, बाकी सब पर हावी हो जाता है। सूर्य की गर्म निगाहों के नीचे एक कुत्ता खड़ा है, पानी के किनारे पर खड़ा है। बहादुरी से कुत्ते ने भौंकते हुए कहा, मैं तुम्हारा रोटी भी छीन लूंगा। अति आत्मविश्वास का एक क्षण निराशा में बदल जाता है, क्योंकि कुत्ता अपना मुंह खोलता है। त्रासदी तब आती है जब रोटी उसके हाथ से फिसलकर बहती नदी में गिर जाती है। हार मानकर कुत्ता नदी से दूर चला जाता है, खाली हाथ घर लौटता है। Once upon a time, the Smith family decided to go on a memorable trip to the zoo. It was a sunny Saturday morning, and the excitement was bubbling over as they set off on their adventure. Lily, the youngest, couldn't wait to see the lions, while Alex, her older brother, was eager to learn about all the animals. As the family entered the zoo, they were greeted by the zookeeper, who handed them a map of all the animal locations. The first stop was the elephant enclosure. "Look how enormous the elephants are," exclaimed Dad. The elephants swayed gently as they used their long trunks to reach high branches. "Elephants are large and grey," explained Mom. "They have big ears and tusks too." They stood for a while, admiring the gentle giants. Next, they wandered over to the monkey jungle. The monkeys swung excitedly from tree to tree. "These monkeys are so playful," said Lily with delight. "And look, they are small but very agile," added Alex. The family laughed, watching the antics of the cheeky monkeys. Nearby, they spotted the elegant giraffes. "Wow, giraffes are so tall," Alex observed. "They have long necks and can reach the tallest leaves." The giraffes moved gracefully, their long legs making it easy to stroll across the grass. "Giraffes are fascinating," reflected Dad, as he snapped a few pictures. As they walked past the lion's den, Lily was thrilled to see the king of the jungle. The lions lay basking in the sun, their golden manes shimmering. "Lions look majestic,"
Mom described. They are strong and brave, and the males have those wonderful manes. The family stood there, captivated by the lion's regal presence. Finally, they arrived at the aviary, where vividly colored parrots squawked cheerfully. These parrots are colorful and can mimic sounds, explained the zookeeper. They are clever too, added Alex. The parrots flitted around, their feathers a dazzling display of blues, greens, and reds. The day passed quickly as the Smith family learned new and descriptive words to describe their wonderful experiences. They used words like enormous for elephants, playful for monkeys, tall for giraffes, majestic for lions, and colorful for parrots. Tired but happy, they headed home, with Lily dreaming of the next adventure, and Alex still talking about the descriptive words they had learned at the zoo. एक युवा सिंधु गौरव के सपनों से भरी अपनी छोटी काया के साथ हलचल भरे गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी के पास पहुंचती है। आस पास के कोर्ट पर समर्पित एथलीटों की ऊर्जा से हवा चटकती है। हलचल के बीच कोच पुलेला गोपीचंद की उत्साहवर्धक मुस्कान सिंधु की यात्रा की शुरुआत का संकेत देती है। अटल इरादे से प्रेरित सिंधु अपनी महत्वाकांक्षी लक्ष्य फुसफुसाती हैं। मुझे भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना होगा। रियो 2016 ओलंपिक बैडमिंटन फाइनल में भयंकर तीव्रता के साथ आग लग जाती है, क्योंकि सिंधु और कैरोलिना मारिन कोर्ट पर भिड़ते हैं। स्कोर संतुलन में है, प्रत्येक बिंदु एक युद्ध का मैदान है, हर रैली इच्छा शक्ति की परीक्षा है। सिंधु एक शक्तिशाली स्मैश चलाती है, जो टाई तोड़ने के उद्देश्य से ऊर्जा का एक उछाल है। मैरिन अटूट संकल्प के साथ हमले के खिलाफ बचाव करती है। उसकी फुर्ती सिंधु की शक्ति के लिए एक मुकाबला है। दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर हैं। खेल के तेज होने पर उनका सामूहिक तनाव स्पष्ट है। सिंधु अपनी दृढ़ता को मजबूत करती है, एक प्रतिज्ञा फुसफुसाती है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। सिंधु ओलंपिक पोडियम पर गर्व से खड़ी हैं। उनके सीने पर एक रजत पदक चमक रहा है। उसकी आंखें भारतीय ध्वज पर टिक जाती हैं। उसके भीतर गर्व की भावना उमड़ती है। जैसे ही देशभक्ति गीत हवा में गूंजता है, सिंधु अपनी यात्रा पर विचार करती है। यह तो बस शुरुआत है, मैं और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती हूं। सिंधु की उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मनाते हुए पूरे देश में सामूहिक जयकार गूंजता है। Every ending holds the promise of a new beginning. Failure is the opportunity to begin again more intelligently. Henry Ford. The only real mistake is the one from which we learn nothing. John Powell. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Confucius. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Winston Churchill. You may encounter many defeats, but you must not be defeated. Maya Angelou. Fall 7 times, stand up 8. Japanese proverb. The first step after falling is often the most empowering one of all. In the small village of West Bengal, a young boy named Babar Ali lived a life that was no stranger to hardship. He spent his days helping his father sell tea at a roadside stall to support their family, all while nurturing a passion for education against the backdrop of poverty. Whenever possible, he attended school, fueled by an insatiable thirst for learning. One day, Babar Ali noticed the plight of numerous poor children in his village who never had the opportunity to attend school. Their lives were spent as laborers or begging on the streets, caught in a cycle that seemed unbreakable. Babar Ali was determined to make a difference. At the tender age of 9, he began an extraordinary journey. After his own school hours, he took it upon himself to teach the children of his neighborhood under the shade of a generous tree. Lacking formal supplies, he ingeniously used sticks to write on mud and recycled paper. As news of his efforts spread through the village, hundreds of children flocked to partake in the education he offered. His unwavering dedication and spirit captured the attention of the media, leading to the recognition of Babar Ali as the world's youngest headmaster. This acclaim brought a wave of donations and government support, transforming his open-air school into a proper institution known as Anand Shiksha Niketan.
Here, free education was given to underprivileged children, changing their lives forever. Moral of the story: no act of kindness is too small. Even a child can change the world with passion and perseverance. Education is the greatest gift you can give. Imagine you have a magical force that can pull things closer or push them away without even touching them. That's what magnets do. But how do they work this magic? Let's dive into the world of magnets and discover their mysteries. First, let's talk about what magnets do. Magnets can attract certain metals, like iron. Have you ever seen a refrigerator door covered with those colorful magnets holding notes and pictures? That's the magnet attracting the metal in the refrigerator. Magnets have two poles called the North Pole and the South Pole. Think of these poles like the ends of a superhero's magnet wand. The North Pole of one magnet attracts the South Pole of another magnet, but the North Pole repels another North Pole, just like how superheroes sometimes team up and sometimes clash. The secret behind a magnet's magic lies in tiny particles inside called atoms. Each atom acts like a tiny magnet with its own north and south poles. When these atoms line up in the same direction, they create a strong magnetic effect. Now, let's drift back a bit in history. Long ago, an ancient civilization called the Greeks found a rock that could attract iron. They named it magnetite because it could magically pick up things. This discovery led scientists to explore and eventually understand today's magnets. But here's a fun twist. Not all materials can be turned into magnets. Only ferromagnetic materials like iron, cobalt, and nickel have atoms that can align their poles. Other materials just don't have the same kind of atom teamwork. In a world full of science and wonder, magnets are an important tool. From compasses that guide sailors across the sea to keeping our refrigerator doors closed, magnets are truly fascinating. There's still more to explore about magnets, like how electricity can create magnetic fields, but that's a story for another day. So, the next time you see a magnet doing its magic, remember those tiny atoms all lining up, creating an invisible force that pulls things close or pushes them away. Magnets may not have superhero capes, but they sure have superpowers hidden within. चेन्नई की धूप में श्रीमती मीनाक्षी बैंक से निकलती हैं, उनका हाथ कसकर 50,000 पकड़े हुए। दोपहर की गर्मी उसकी थकान को बढ़ा देती है, क्योंकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकती हैं। वह व्यस्त शहर के बीच एक ऑटो रिक्शा के लिए इशारा करते हुए अपना हाथ उठाती है। ऑटो रिक्शा आता है। उसका ड्राइवर उसे लगातार धूप से दूर ले जाने के लिए तैयार है। वह चेन्नई की गर्मी से राहत पाने के लिए ऑटो रिक्शा में कदम रखती है। मीनाक्षी घर लौटती है। उसके आसपास की परिचित शांति तुरंत ही टूट जाती है। उसे एहसास हुआ उसका हैंडबैग गायब है। मीनाक्षी के चेहरे पर परेशानी की लहर दौड़ गई। घबराहट बढ़ रही है। मीनाक्षी चिल्लाती है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगी? निराशा से भरी आवाज में वह विलाप करती है, मेरी पेंशन, मेरा आधार कार्ड, मेरी दवाइयां सब चली गईं। शाम मीनाक्षी के घर पर उतरती है। उम्मीद लगभग गायब हो गई है। दरवाजे की घंटी की अचानक आवाज शांति को भंग कर देती है। मुरुगन की आवाज हवा में गूंजती है, अम्मा, मुझे आपका बैग मिल गया। मुझे याद आया कि आपने कहा था कि आपका घर मंदिर के पास है, इसलिए मैंने आसपास पूछा। मीनाक्षी के शब्द सुनते ही आंसू आ जाते हैं। कृतज्ञता उस पर छा जाती है। भावुक होकर मीनाक्षी रोती है और उसे धन्यवाद देती है। मुरुगन धीरे से मुस्कुराता है। खोया हुआ बैग लौटाने से राहत महसूस करता है। शहर जागता है क्योंकि संगीता अपना अथक कार्य शुरू करती है। उगता सूरज सड़कों पर लंबी छाया डालता है। चेहरों का एक सागर गुजरता है। हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। संगीता के मौन समर्पण से अनजान, निडर होकर संगीता शांत संकल्प के साथ अपना काम जारी रखती है। उसकी चाल लयबद्ध और अटल है। अदृश्य और अकृतज्ञ होने के बावजूद संगीता की आत्मा चमकती है। व्यस्त शहर में शांत शक्ति का प्रतीक। संगीता की देखभाल में सड़क धीरे धीरे बदल जाती है, जो उसके काम के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है। स्कूल की जीवंत पृष्ठभूमि के बीच
संगीता एक छोटे बच्चे को अकेले रोते हुए देखती है। संगीता आती है, उसकी आवाज चिंता से कोमल होती है। वह पूछती है, क्या हुआ? आंसू भरते हुए बच्चा सिसकता है, मेरा स्कूल बैग खो गया है। उसमें मेरी किताबें और होमवर्क था। संगीता की आंखों में एक संकल्प चमकता है। वह मदद करने का फैसला करती है। संगीता बच्चे को परिचित स्कूल मार्ग पर ले जाती है। उसकी दृढ़ दृष्टि खोए हुए खजाने की तलाश में क्षेत्र को देखती है। विजय उनके चेहरों पर चमकती है, क्योंकि बैग आश्रय देने वाले पेड़ के नीचे दिखाई देता है। आपने मेरी साल के अंत की परीक्षा बचा ली। बच्चे की खुशी भरी चीख गूंजती है। In a village, there lived an elderly watchmaker named Ramu Kaka. He repaired old watches and taught people the value of time. Most villagers respected him, but a young man named Raju often said, "Time doesn't matter. Money can buy everything." Raju spent his days playing mobile games with friends, woke up late, and had no interest in work. His father, a farmer, had repeatedly advised him to value time, but Raju remained unaffected. One day, Ramu Kaka called Raju over and gave him a watch without any hands. Raju said, "What kind of watch is this? It doesn't show time." Ramu Kaka smiled and replied, "This is what your life is becoming, a watch with time that you choose not to see." Raju mocked, "What difference does a watch make? When I earn money, everything will be fine." Over the next few days, Raju's habits worsened. Suddenly, his father became ill, and there was no one to look after the fields. All eyes were now on Raju. Raju realized how much time he had wasted. He knew nothing about farming. He went to Ramu Kaka in tears and said, "Kaka, I need the watch with hand at work again." Ramu Kaka embraced him and said, "Time can never be paused, but you can start valuing it from today." Raju began working hard. He woke up early, worked in the fields, and studied as well. A few months later, his fields started producing the best crops. Now, the villagers looked at him with respect. Moral: time is the greatest wealth. Those who value time truly achieve success in life. Once upon a time, in the bustling land of ancient Egypt, there lived a remarkable queen named Cleopatra. She was not just any queen, she was famous for her beauty, intelligence, and charm. But who was Cleopatra really? Cleopatra was born around 69 BC. Her full name was Cleopatra VII Philopator, but most people just call her Cleopatra. She was a part of the Ptolemaic dynasty, a Greek family that ruled Egypt after the time of Alexander the Great. This meant that even though she was the queen of Egypt, she wasn't actually Egyptian by birth. Isn't that interesting? As a young girl, Cleopatra learned many things that would help her later as queen. She studied languages, math, science, and history. She was well educated and was even able to speak 8 languages. This made her very popular with rulers and people far and wide. Cleopatra became queen when she was only 18 years old, alongside her brother. But things were not always easy for Cleopatra. There were many people who wanted to take her throne away. To make things safer, she teamed up with famous Roman leaders like Julius Caesar and Mark Antony. Her friendship with Mark Antony was special. People say they were in love and that they shared many adventures together. Cleopatra and Mark Antony tried to rule Rome and Egypt together, but their plans didn't last forever. Sadly, when they faced defeat in a big battle against Octavian, who became Emperor Augustus, their story took a sad turn. Cleopatra was known for her cleverness and bravery even until the end. When she realized that she could never win against Octavian, she chose a dramatic and mysterious way to leave this world. According to legend, she allowed a poisonous snake called an asp to bite her. Cleopatra's story has intrigued people for thousands of years, and she remains one of the most fascinating figures in history. And so, the tale of Cleopatra, the Queen of the Nile, reminds us of a powerful woman who is not only ambitious but also smart and captivating. Through her alliances and her unforgettable story, Cleopatra's legacy continues to capture imaginations even today,
making her one of history's most unforgettable queens. विशाल आकाश के नीचे रामलाल और उनके बेटे मोहन और सोहन अंतहीन खेत के बीच खड़े हैं, दिन का काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। शांति भंग हो जाती है क्योंकि गर्म शब्द उठते हैं और हवा असहमति के तनाव से कंपन करती है। रामलाल अपने बेटों को देखता है, उसका चेहरा चिंता से भर जाता है क्योंकि उनकी बहस उनके काम के सामंजस्य को खतरे में डालती है। निराशा से भरी आवाज में रामलाल चेतावनी देते हैं, अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहोगे तो हम कभी भी अच्छी फसल नहीं उगा पाएंगे। उसके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है क्योंकि तीनों आकृतियां स्थिर खड़ी हैं। उपजाऊ खेत उनके असहमति का मूक गवाह है। अपने घर की धुंधली रोशनी में रामलाल बैठे हैं, उनका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। गांव का मुखिया आता है, उसकी उपस्थिति अंधेरे कमरे में ज्ञान की किरण है। ग्राम प्रधान शुरू करते हैं, एक कहानी सुनाते हुए। एक बार एक किसान ने अपने बेटों से लकड़ियों का एक बंडल तोड़ने को कहा। कोई भी इसे तोड़ नहीं सका, वह जारी रखता है, अतीत से एक सबक लेते हुए। फिर किसान ने उनसे एक एक करके लकड़ियां तोड़ने को कहा और बेटों ने आसानी से हर लकड़ी तोड़ दी। एकता में शक्ति है। गांव के मुखिया के शब्दों का भार रामलाल पर पड़ता है। उसकी आंखों में समझ की एक झलक चमकती है। रामलाल समझता है कि उसे अपने परिवार को एकजुट करना होगा। खेत के विशाल आकाश के नीचे रामलाल अपने बेटों को बुलाता है। पीढ़ियों का भार उसके अनुभवी चेहरे पर अंकित है। उम्र के अनुभव के साथ रामलाल शुरू करते हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। मोहन और सोहन समझ की सुनहरी रोशनी में नहाते हुए अपनी पिछली असहमति की गहराई को समझते हैं। उद्देश्य में एकजुट मोहन और सोहन अपनी कोशिशों को आपस में जोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनका वादा हवा में लटका हुआ है। मोहन और सोहन एक साथ हल चलाते हैं। उनका साझा श्रम उपजाऊ मिट्टी को बदल देता है। वे खेत जो कभी बंजर थे अब भरपूर फसल से भरे हैं, जो उनकी एकता का प्रमाण है। Once upon a time, in the majestic city of Shrivasthi, the Buddha wandered through the lanes, sharing his wisdom with all who would listen. One day, as he walked by the marketplace, he encountered a humble beggar who was well known among the townsfolk for his endless begging, yet never receiving enough. Seeing the Buddha approaching, the beggar gathered his courage and approached him, bowing deeply. Great teacher, he said, I live my life asking for alms, but I never receive what I need. Could you teach me the secret to abundance? The Buddha observed the beggar's ragged clothes, his worn face, and the deep shadows of hardship upon him. With compassion stirring in his heart, he nodded and said, Indeed, you shall learn. But tell me first, what do you possess? The beggar was surprised. How can I possess anything? I am but a poor man with nothing to my name. Ah, replied the Buddha, every person possesses something. Tell me truly, what do you have? The beggar thought for a moment and then said, I have my worn shirt and a bowl for my alms. To this, the Buddha offered a gentle smile. You indeed have things that are yours. Now, tell me, in the spirit of generosity, what are you willing to give? The beggar was struck by the Buddha's words and hesitated, pondering deeply. Though his heart felt the strain of scarcity, he reached into his pocket and found a single, shining silver coin, a possession that imparted a modicum of stability. He held it out to the Buddha, who accepted it, congratulating the beggar on his willingness to give despite his poverty. You see, the Buddha explained, true abundance lies not in what you receive, but in what you give. The act of giving itself opens your heart, connecting you to others and their compassion. Henceforth, as you offer your heart freely, the world shall offer back to you with greater fullness. With newfound understanding, the beggar thanked the Buddha and continued his life, finding not just abundance, but also warmth from others who noticed his changed spirit. In this legend, it is understood that giving nurtures the spirit, and through giving, one becomes truly prosperous enough to open possibilities for receiving. In a peaceful jungle far away, there lived a young elephant named Ellie.
Ellie was not like other elephants. She had a special blanket that helped her sleep soundly every night. Her blanket was soft and colorful, and it was covered in magical stars that twinkled gently in the dark. One evening, as the sun began to set, Ellie felt her eyelids getting heavy. "Oh, it's time to go to bed," she yawned. But as she shuffled over to her favorite sleeping spot under the mango tree, she realized her blanket was missing. "Oh dear," gasped Ellie. "I can't find my blanket. How will I sleep without it?" Ellie searched high and low. She looked behind the bushes, under the fallen leaves, and even asked her jungle friends if they'd seen it. "Have you seen my blanket, Freddie the Frog?" she questioned. "Not today, Ellie," replied Freddie, hopping off toward the stream. "What about you, Polly the Parrot?" "Sorry, Ellie. I was busy gathering new feathers," chirped Polly, flapping off into the sky. The moon rose higher in the sky, and Ellie began to feel worried. But then, she remembered something wise her mother once told her. When you lose something, think of where you last saw it. Suddenly, Ellie recalled that she had been playing near the waterfall earlier that day. With a spark of hope, Ellie trotted over to the waterfall, where the water glistened under the starlight. "There it is!" cried Ellie with joy, spotting her blanket nestled on a rock, right where she'd left it. "Thank goodness!" As she picked up the blanket, a gentle breeze blew through the trees, and Ellie felt a wave of calmness envelop her. Vanilla and mint from nearby flowers filled the air, and Ellie closed her eyes, wrapped in her blanket's comforting embrace. As Ellie lay down under her mango tree, she understood that patience and remembering could solve many mysteries. Soon, her breathing turned steady, and she drifted into a dream filled with twinkling stars, gentle tides, and the soft voices of her friends. And so, the jungle was silent again, with Ellie snuggled under her magical blanket, dreaming sweet dreams until the sun rose once more. Once upon a time, in a small village, there lived a kind and cheerful boy named Rohan. He was only 6 years old, but he had a big heart full of love for animals. Every day on his way to school, he would stop to pet the stray dogs and feed them bits of his lunch. One rainy evening, as Rohan was walking home, he heard a soft whimper near the bushes. Curious, he peeked inside and found a tiny, shivering puppy. Its fur was wet, and it looked scared and hungry. "Oh no, poor little puppy, you must be lost," Rohan said, gently picking it up. He wrapped the puppy in his raincoat and hurried home. When he reached home, his mother was surprised. "Rohan, where did you find this puppy?" she asked. "It was alone in the rain, Mama. Can we please keep it?" Rohan pleaded with big, hopeful eyes. His mother smiled and agreed. They dried the puppy, fed it warm milk, and made a cozy bed for it. Rohan named the puppy Bubbles because it loved chasing soap bubbles. The next day, Rohan and his mother put up posters around the village to see if anyone had lost a puppy. A few days later, an old man named Mr. Sharma came to their door. "That's my grandson's puppy, Tommy," he said with relief. "He's been crying for days since Tommy went missing." Rohan's heart sank. He loved Bubbles, Tommy, already, but he knew the puppy belonged to someone else. With tears in his eyes, he handed the puppy to Mr. Sharma. "Thank you, kind boy," Mr. Sharma said gratefully. "You have a pure heart." The next week, Mr. Sharma returned, but this time, he had a surprise. "My grandson wanted you to have this," he said, handing Rohan a new puppy. "We found Tommy's sibling, and we want you to keep it as a thank you for your honesty." Rohan's face lit up with joy. He hugged the new puppy tightly, knowing that doing the right thing had brought him even greater happiness. Moral of the story: honesty and kindness always bring rewards. Helping others, even when it's hard, fills our hearts with true joy. Timmy was just a regular sloth, slow and sleepy. He had dreams of becoming a professional skateboarder. Everybody laughed at his ambition. Sloths aren't known for speed. Timmy found an old skateboard under the bushes. Rolling slowly, he practiced day and night, mainly nights.
Sloths have incredible patience, so learning was a leisurely pace. Timmy's life transformed the day he saw Tony, the turtle. Tony was the fastest of all turtles, a skateboard sensation. Inspired, Timmy approached Tony for tips and tricks. Tony, impressed by Timmy's determination, gladly coached him. Timmy's moves improved, but still, fans giggled at competitions. One rainy day, an obstacle confronted all competitors. Torrential rain made track slippery. Fast skaters struggled. Timmy's slow, precise movements thrived in the wet chaos. That day, Timmy won his first gold medal, shocking everyone. Now, Timmy's motto, slow and steady wins the ramp.